Welcome back to my channel, Gabriel the Divine Crew. Today is the feast of John the Baptist, the saint who baptized Jesus. My video is regarding baptism of an infant child, where Jesus in the Bible spoke about the children so many times by blessing them. He told, "Let the children come to me." This is perfect example of love. Jesus loved the children so much, although his disciples said not to bring the children to Jesus when he is preaching. प्रभु ईश्वर का प्यार अपार था बच्चों के लिए, इसीलिए उन्होंने बच्चों को हमेशा अपने पास आने दिया। वे चाहते थे कि शिक्षा की नींव शुरुआत से ही बच्चों के हृदय में डाली जाए, जिससे वे बड़े होकर युवा होकर एक अच्छे इंसान बन सके, उनमें मानवता के उदाहरण कूट कूट कर भर जाए। प्रभु यीशु की शिक्षा द्वारा वे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मदर इज आवर फर्स्ट टीचर एट होम। हमें हमारी माँ द्वारा शिक्षा घर से ही मिलना शुरू हो जाती है। बचपन की वो पहली शिक्षा हमें जीवन भर याद रहती है, क्योंकि माँ द्वारा सिखाई हर बात हमारे दिमाग में एक बक्से में कैद हो जाती है। मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे धीरे धीरे आधुनिक यंत्रों के प्रभाव में आकर उन शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर्स उस शिक्षा को बरकरार रखते हुए बच्चों का पालन पोषण करती हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं स्कूल देख पाई और वहाँ पढ़ सकी और अपने टीचरों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाई। मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश में बहुत जल्द शिक्षा फ्री हो जाएगी, ताकि हर एक बच्चा उस धन को ग्रहण कर सके, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा प्रकाश है जो हर प्रकार के अज्ञान भरे अंधकार को दूर करता है। शिक्षा द्वारा बहुत से जीवनों में परिवर्तन आ चुका है। आज हमारे देश में कई ऐसे युवा, कई ऐसे बालक, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से हमारे देश को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया है। Education is the only light which will make you shine in the world. As Jesus speaks about education to be free. As in his preaching, he never took any kind of fees from his disciples or the people with whom he used to preach. I pray that Jesus provide his guiding hands to all the teachers, all the ministers and all the big people of the society to make education free. My agenda of making this video is to approach to all the public officers and the ministers of my country to make education free for the poor children, for the destitutes. Free education is very necessary. I pray to Jesus that one day our country belong to a country where number of educated individuals are there who will represent India on every international platform, as it is not able to do it now. As India being an independent or under-independent country, it is very necessary for the education of a country to be powerful and impactful. I pray to Jesus that he provide you with the gifts of Holy Spirit. All the children get blessed by him, by the Holy Mother Mary, as he always protected and guided Jesus when he was an infant, when he was a child, and when he became a youngster. This is my last prayer from all my youngsters and my children, that they too get involved in reading the Holy Scripture daily, attending their classes, giving time to the studies, as they give it to the internet and the social media too. I'm happy that the young minds are influenced by the unknown ventures, but you too need to get influenced by the Holy Scripture, as it is the only book which is the
genius at all levels. Thank you so much for hearing me so patiently. It's my testimony of life that I am here standing on the platform and speaking so nicely in a communicable language to all of you to make you understand the power of Holy Scripture. Thank you.